So ellipse, we were talking about ellipse. The ellipse. So we have discussed the basic concepts of the ellipse. The ellipse. So you know that if I am taking a standard ellipse whose center is at origin, suppose so I am considering a ellipse which is standard. So I am taking this like, suppose this is your ellipse, okay, and what it will be having, you know, it has two directrix. It will be having two directrix. Like this, and it has, this is your x-axis, this is your y-axis. I am taking standard, so it is your origin. Suppose it is your x-axis, this is your y-axis. I am taking the major axis as A and minor axis as B. So the equation will be x square upon A square plus y square upon B square is equal to 1. This is the, and you can take here that it has basically two foci, S dash and S. I am denoting by this. So this foci will be what? If you have some point P on the ellipse whose coordinates suppose x comma y, so you can have here the distance and here if I am drawing a perpendicular, it is your PM. So basically the definition of ellipse is what? That if you have a relation satisfying this, PS is equal to EPM, where E is less than 1. So here your eccentricity is E less than 1. E is called eccentricity. And here, if it is your A dash, this is your A. So you know that your A dash is equal to 2A. You know? So we have some small geometry also. You can take this point as Z dash. Suppose this is your Z, or you can plot a line here also, which is some PM dash. If I am extending this line from P to this directrix, suppose it is your M dash, PM and PM dash. So the relation, the equation will be what? That your SA should equal to E times of AZ. It is the definition. Okay, if you have ellipse, then we shall have 2 points A and A dash and ZS and ZS dash reduced in such a way that your SA distance should equal to E times A as Z, and as A dash distance, this distance should equal to E times A dash Z. Yeah. So here if you will solve, your CZ will be coming. इससे मैं CZ की वैल्यू निकाल सकता हूँ. Where is C? C is this center, जो O है. इसे O को अगर हम C से नोट कर लें for a moment, suppose ये center है, इसे मैं C से नोट कर देता हूँ अगर. So you can find your distance. What is this distance? CZ. This is your C and this is your Z. So if I want to find what is this CZ distance, so because A dash is this major axis. This I can write how much? AS plus S A dash, and by putting this, AS is EAZ and this is your EA dash, right? ये वैल्यू पुट कर दिया हमने इसमें, ठीक है. This is the condition which we are considering here. So you will be getting E times AZ plus A dash Z, and AZ plus A dash Z is how much? AZ plus A dash Z. This is equal to E times twice CZ. C is the middle point of this, है ना? So AZ plus A dash Z.
कितना जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ सी जेड, क्योंकि सी जेड के आपके ये सेंटर है ये, तो ये आपके पास ये लाइन है पूरी, है ना। दिस इज कंप्लीट ए डैश जेड एंड दिस इज योर ए जेड। तो जब आप इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो सी जेड है इसका हाफ है बिकॉज इट इज सेंटर, सो इट विल बी ट्वाइस सी जेड। सो यू गॉट, और ये ए डैश आपका 2a था ऑलरेडी, सो दिस इम्प्लाइज दैट सी जेड इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ये सी जेड की वैल्यू निकल के आई ए अपॉन ई। सी जेड मीन्स दिस, तो सेंटर से डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये डिस्टेंस ए अपॉन ई है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू a upon e, ये distance, because it is a distance, cz is what, distance from the center, I am considering origin. Similarly this distance will be coming minus a upon e because it is on the negative side. So this you can find by doing this small calculation. यहाँ से आपके पास की इक्वेशन निकल आती है. So equation of directrix is, so there are two directrix. There are two directrix for the ellipse, and equation x is equal to plus minus a upon e. Okay, and this is called your major axis, minor axis तो हुई कि this is your minor axis, अगर मैं इसको b dash कह दूं, and a dash is the major axis, and the coordinate of this foci, they are ae comma 0, s से coordinate होते हैं ae comma 0 and it is minus ae comma 0, they are equidistant from the center, and the ls l dash, अगर यहाँ से मैं एक line draw करूं like this, so it will be your lattice rectum. Suppose I am taking this line, it is L, S, L dash. This L, S, L dash is called lattice rectum. Lattice rectum. And the length of lattice rectum is 2b square upon a. Okay, 2b square upon a is the length. So in this way you can find all these things. ठीक है, ज्योमेट्री आप इसमें देख सकते हैं, बाकी सारे क्या 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 है. Next thing we have here, sum of the focal distances of a point. Next article, page 163, में sum of the focal distances of a point. Means what? Sum means sum of focal distances means what I want to find here. क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें, कितनी डिस्टेंस है ये, PS plus PS dash. So I want to find what is this PS plus PS dash. PS plus PS dash. Okay, I want to find this. So let P be any point. Okay, sir. Strands are there और सो गए लगा के से, क्यों भाई? यस सर. यस सर. मैं कभी इधर उधर चले गए आप, मुझे लग रहा है. तो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट टू फाइंड सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस. सुबह से आपकी क्लास चल रही है, सो आई नो कि यू मस्ट बी टायर्ड, बट
ठीक है यार, क्या करा जाए, बैठे बैठे घर से तो No, कर no, लिए। sir, we are fine. गुड। सो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस, तो लेट P be a point on the ellipse, P x comma y be a point on the ellipse, then by the formula we have PS is equal to EPM, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर डिफाइनिंग ऑल द कोनिक्स, यू नो। पैराबोला के लिए E1 हो जाएगा तो PS is equal to EPM, ellipse के लिए less than 1, hyperbola के लिए greater than 1, and this EPM I can write E and PM is equal to how much, NZ, because this PM distance I am taking, if I am drawing a line perpendicular here, so I can write this PM as an NZ. यहाँ पर हमने क्या करा, I am drawing a perpendicular line from here to this, तो ये y coordinate क्या है आपका, you are moving from origin to this, so if it is n, so I can write NZ. थोड़ी सी ज्योमेट्री करनी है हमें यहाँ पे, keep in mind, so this I will be writing NZ, PM is equal to NZ, so this I can write E into NZ, and NZ will be what, NZ is how much, NZ is how much, CZ minus कितना, NZ is how much, बताइए, CZ minus CN. CN, ठीक, CZ minus CN, है ना, and this I can write now CZ की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना था, it was coming A upon E, है ना, ये डिस्टेंस होती from the origin to the directrix, so this was A upon E, so this you can write A upon E minus, and Cn is how much, Cn कितना है देखो, Cn कितना, अगर पॉइंट P x y है तो how much Cn, x, है ना, ये पॉइंट P x y अगर आपका, तो इट मींस व्हाट कि यू मूव फ्रॉम दिस सेंटर, ओरिजिन इज द सेंटर, x डिस्टेंस एंड y डिस्टेंस, सो Cn कितना होगा, कोऑर्डिनेट कितना उसमें, x, so now multiplying it you got A minus EX, this is the value of PS, I want to find PS plus PS dash, now I will find similarly PS dash, so PS dash will be E PM dash, है ना, by this formula same, और PM dash is how much, E times PM dash, देख लीजिए जरा, PM dash means this distance, so it will be how much, and CN plus CZ dash, है ना, क्योंकि ये आपके इधर है, so this will be CZ dash plus CN, CZ dash plus CN, फिर हमने इसकी वैल्यू रखी यहाँ पर, तो it will become E times, and this will be again CZ dash, देखिए CZ dash कितना डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक, कितनी है ये, माइनस A अपॉन E, है ना, तो माइनस A अपॉन E एंड प्लस CN, CN तो हमने निकाला ही है यहाँ पर अभी, CN कितना है, x है, CN is x, so how much it is coming, x minus, sorry, EX, और ये कितना आ रहा है, माइनस A प्लस EX आना चाहिए, EX प्लस A आना चाहिए, यहाँ पे तो आपके पास सही था, CZ माइनस CZ डैश प्लस CN, तो दिस विल बी CZ डैश, एक बार देखते हैं, CZ डैश, CZ डैश तो आएगा माइनस A अपॉन E, और ये है, एक बुक चेक कर लेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, पॉइंट, हाँ, PS dash is coming A plus EX, PS dash is E PM dash CZ dash plus CN, and this should equal to A plus EX, A plus EX आना चाहिए, so this will be A upon E होगा यहाँ पर, फिर ये प्लस के साइन ही होगा यहाँ, CZ dash की वैल्यू भी आपके A upon E ही आएगी यहाँ पे,
So that will be E plus EX. ठीक है. Now when you will find this is A minus EX, this is A plus EX. So when you will find PS plus PS dash, so how much it will be coming? A minus EX plus EX plus A. So you got 2A. So it is 2A. So it means that PS plus PS dash is equal to 2A. So it is the sum of the focal distances of a point. This is 2A. Or you can say the sum of the focal distances of any point on the ellipse is equal to the 2A means my major axis. So you can say, so the sum of the focal distances of any point on the ellipse is equal to the major axis. 2A is your major axis. इसको अगर आप मैकेनिकल मेथड्स, you can understand this thing as a mechanical method. Suppose you have 2 points which is fixed here. ठीक है, इसे एक हम थ्रेड से बांधे, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है फिक्स पॉइंट से, और यहाँ पर एक पेंसिल रखो, यहाँ पर put a pencil here or turn in a way that the two portion of the thread between it and the fixed point are always tight. यानी कि इनके बीच में जो थ्रेड है ये, और यहाँ पर अगर एक पॉइंट है हमारे पास, सपोज करो ये थ्रेड से बना हुआ, इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ये हमेशा टाइट रहे, लूज ना हो, ये हमेशा टाइट डिस्टेंस रहे. अब अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे तो अब जो ये लोकस आएगा इस तरीके से ना, इट विल बी एन एलिप्स, और ये जो फिक्स पॉइंट होंगे ये आपके फोकी होंगे, जो मैंने एस डैश और एस कहा है. टेक अ थ्रेड, fix 2 points and take another point here such that this thread is remain tight, loose nahi ho, and move in this way that it is always tight. So now when it will cover, it will give you an ellipse. So this thing you can understand from this foci distance between a point. Then one geometrical property is also there, a geometrical property, 10.15, a geometrical property. A geometrical property. So if P be a point and Pn is be the ordinate, you have an ellipse. Let Pxy be a point and Pn be the ordinate of P. Be the ordinate of P. Ordinate means this is your this. तो Pn क्या था, ये ordinate है, इसकी distance कितनी है, ये y है, Pn is y. So you know that in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So it means I am taking like this. You have an ellipse like this, suppose, and here some point P is fixed x comma y. So y is what? This is your y. This is perpendicular. This is your center. Like this I am taking. So what will happen? So what is this x? This distance is x. This is your y. So this x I can write Cn square upon a square plus y I can write Pn square over b square, this equal to 1. Or you can say that Pn square upon b square is how much? What is b? ये आपके पास b था, so this is small b. So b को I can write bc square. So Pn square upon bc square is equal to 1 minus Cn square upon, and a is what? This distance c, and this is your a. So this small a is how much? Ca is a.
So I can replace this a by ca square, or you can take LCM ca square. So you will be getting ca square minus cn square. A square minus b square, you can factorize it, ca plus cn and ca minus cn upon ca square, and ca plus cn, ca plus cn, है ना. This will be how much? इसको I can write n a dash. अब इसे यहाँ देखना पड़ेगा आपको, जो मेन फिगर थी. You have ca plus cn. तो ca plus cn, can I write it n a dash? n a dash ये डिस्टेंस है पूरी, देखिए. So c है ना, तो cn plus na जब आप लिखेंगे तो it is nothing but it is your n a dash. So this I can write n a dash or ca minus cn, ca minus cn, it is how much? This distance an, or na or an upon ca square. So this means pn square upon, से दी चले जाइए, an dot n a dash, this equal to bc square upon ac square या ca square. तो एक रेशियो निकल के आया between this pn na dash bc dash. इसका यूज I will do when I will taking that one topic. वहाँ भी इसका यूज करेंगे. ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है कि the ratio between this pn square to an and na dash will equal to bc square upon ac square. bc square means your this small b square and ac means this a square, है ना. this ac is c और bc कितना है? b है. So I will use this property. Now this ellipse is a limiting case of ellipse. Circle is a limiting case of ellipse. Next topic we have limiting case of an ellipse. Limiting case of an ellipse. What if you have, as I told you, ellipse जो है वो क्या आपका? It is a, this is general case of ellipse. General case of circle. ellipse का circle कब बनेगा? बताइए. When it will be a circle. क्यों भाई? So when A equals B. कौन बोला? फिर से बताइए. So A equals B. जब a और b के इक्वल रहेगा तो सर्किल बन जाएगा, है ना. और a b के इक्वल होगा, उस केस में क्या होगा आपके पास? if a equal to b, तो you can see here your, है ना. तो I can take that this is a limiting case. अगर अब ये एक इक्वल कब होगा? if this e tending to 0. अगर मैं e को 0 पुट कर दूं तो this b square is equal to a square और b is equal to plus minus a. So case first you can say that let e tending to 0 and a remaining finite. A remaining finite. ठीक है. a को finite रखा है, e tending to 0. तो what will happen? As b tends to a, the foci approach the center and the ellipse and the ellipse becomes a circle. Okay.
तो अब ई टेंडिंग टू 0 करेंगे तो व्हाट विल हैपन, और ए को अगर हमने फाइनाइट रखा हुआ है, फाइनाइट है ये ना, तो व्हाट विल हैपन, बी टेंडिंग टू ए, ये तो हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब ई टेंडिंग टू 0 तो व्हाट विल हैपनिंग, बी स्क्वायर इज हाउ मच, बी स्क्वायर इज टेंडिंग टू ए स्क्वायर, टेंड्स कर देता हूँ मैं क्योंकि ई को 0 की तरफ टेंड कर रहा है, दैट मीन्स बी टेंडिंग टू ए, तो बी जो है वो ए की तरफ टेंड करेगा। सो जब बी विल बी टेंडिंग टुवर्ड ए तो क्या होगा कि जो फोकी है वो आपके अप्रोच करेंगे सेंटर की तरफ, है ना। इस फिगर को देखें हम, मेन फिगर ये थी, जब बी टेंडिंग टू ए तो बी ए के बराबर होगा, तो उससे क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है दोनों दे विल श्रिंक एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। एस भी इधर जाएगा, एस डैश भी इधर मूव करेगा, है ना। क्यों, यहाँ पे आप देखिए ई 0 हो रहा है, जब ई टेंडिंग टू 0 हो रहा है इट मींस व्हाट, this point is moving towards 0, this point is moving towards 0, you can say your foci they are tending towards the center. So this is a limiting case, circle is the limiting case of an ellipse. Now how it is a limiting case, we are taking e tending to 0. Case 2, it can become a parabola also. A parabola is the limiting case of an ellipse of which the axes are of infinite length. Infinite length, but the lattice rectum is finite. ठीक, पैराबोला बन सकता है कब, जब एक्सिस तो इनफाइनाइट लेंथ की हो, यानी कि ये एक्सिस भी इनफाइनाइट लेंथ की है, ये एक्सिस भी इनफाइनाइट लेंथ की है। तो अगर आपकी दोनों एक्सिस इनफाइनाइट लेंथ की है तो क्या होगा, यू विल बी हैविंग a parabola, but condition is there that lattice rectum should be finite. तो lattice rectum क्या था, lattice rectum था ये distance between a point L S L dash, तो ये तो फाइनाइट है। हम इस तरीके से लिमिटिंग पॉइंट ले कि ये चीज तो फाइनाइट रहे। अब ये फाइनाइट रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास इफ यू आर टेकिंग, सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो व्हाट विल हैपन कि ए आपके पास जो है वो इनफाइनाइट है, तो यू कैन नॉट क्लोज इट, क्योंकि अगर मैं क्लोज किया तो ये क्या बन जाएगा, एलिप्स। तो आई कैन नॉट क्लोज, ये कहाँ जाएगा, क्लोज होगा इनफाइनाइट पे। और बी भी इनफाइनाइट है, लेकिन बी इनफाइनाइट ऐसे है कि ये जो डिस्टेंस है ये फाइनाइट है, तो अब ये क्या दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ पैराबोला। ओके, सो दिस इज अ लिमिटिंग केस, पैराबोला इज अ लिमिटिंग केस ऑफ एन एलिप्स अंडर दिस कंडीशन। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ किया है इसमें, ओरिजिन को ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें टू -a to 0। ठीक है, पेज 164 पर है ये। So keep in mind these two limiting cases. Next topic, यहाँ तक बताइए, क्लियर है भाई सब? Is it clear how they are the limiting cases? देखो ये तो दिख रहा है आपको, इसके लिए you have to do some geometry जो उन्होंने किया है। I am skipping here, if you want to see you can see in the page 164, transferring the origin to -a, 0 and then solving the equation of an ellipse। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी पैराबोला की क्वेश्चन बनकर आ जाएगी, कुछ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx टाइप का। इस केस को यू कैन सी फ्रॉम बुक, सी पेज 164, हाउ दिस इज अ लिमिटिंग केस। यहाँ मैंने इसको ज्योमेट्रिकली समझा दिया आपको कि a इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, b इज इनफाइनाइट लेंथ, बट lattice rectum इज फाइनाइट। तो इस तरीके का कुछ कर्व आपको दिखेगा, यू कैन गेट एन आइडिया। क्योंकि अगर ये भी इनफाइनाइट होता lattice rectum तो फिर क्या होता है, ये कर्व इस तरीके से ऊपर भी बढ़ता चला जाता है, नीचे ही फाइनाइट नहीं होता कभी भी। लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनाइट lattice rectum क्या होगा कि कर्व आगे धीरे धीरे इस तरीके से टर्न हो जाएगा।
Next topic we have auxiliary circle. Auxiliary circle. Auxiliary circle definition is what? The circle described on the major axis of the ellipse. Means suppose you have ellipse like this. अब क्या करें, जो इसकी मेजर एक्सिस है इसको डायमीटर लेके आई एम ड्राइंग एन एलिप्स इस सर्किल, उसके डायमीटर ये हो तो जाहिर जो सर्किल होगा आपका वो सर्किल कहाँ जाएगा, इसके डायमीटर के सर्किल है ना, कीप इट माइंड कि ये जो है डायमीटर उसका ये होना चाहिए. सो यू कैन सी हेयर कि दिस विल अ सर्किल है ना, तो ये जो सर्किल बना आपका whose diameter is the major axis, this is called auxiliary circle. So this is your auxiliary circle. The definition what? The circle described on the major axis of an ellipse as diameter is called the auxiliary circle of the ellipse. क्योंकि जब auxiliary circle होगा तो it will be always with respect to some ellipse. पहले आप इलिप्स लेंगे, उसकी मेजर एक्सिस लेंगे एंड दैट मेजर एक्सिस विल वर्क एज अ डायमीटर, तो जाहिर है जो सर्किल आएगा वो बाहर आएगा इस तरीके से. ओके, सो हियर यू कैन डू सम स्मॉल ज्योमेट्री आल्सो. व्हाट, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज योर, सो पॉइंट्स अगर हम ले लें हियर, आई एम टेकिंग सम पॉइंट्स, this is your point A dash, this is your A, always I am taking center is C, this is your A. What I am doing now, I am taking one, this is always B, this is I am taking B dash, and I am taking line. So you know if I will take a line here, तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये कितना होगा, तो बता सकता है? 90 डिग्री होगा ना. Why? Why it is so? This is हाँ, क्योंकि ये सेमी सर्किल है, ए डैश और दिस है ना, दिस इज अ सेमी सर्किल, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना. यहाँ से मैं अगर एक एंगल ड्रॉ करूँ, ये एक एंगल अगर हम बनाए, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, ये Q पॉइंट ऑन दिस Q पॉइंट इज ऑन द सर्किल एंड दिस P पॉइंट इज ऑन द एलिप्स. यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ लाइक दिस, डॉटेड लाइन ले लेते हैं, काम करते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, कर तो सकते, चलिए ऐसे ले लेते हैं. सो इफ आई एम टेकिंग this is suppose the angle with this point Q is subtracting here, ये कुछ एंगल बन रहा है सपोज फाई, है ना. इस फाई को हम कहते हैं एसेंट्रिक एंगल. जो फाई एंगल बनेगा विद दिस पॉइंट Q, जो ऑक्सिलरी सर्किल है इस पे अगर हम कोई पॉइंट Q लें, दैट पॉइंट Q विल मेकिंग अस एंगल विद दिस C, दिस इज कॉल्ड योर एसेंट्रिक एंगल. तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ लाइक दिस, यहाँ पे है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो यू नो ये मैं हमेशा एन लेता हूँ और जहाँ पे ये कट करा इस पॉइंट को आई विल टेक P, तो ये P आपका एक पॉइंट होगा. ओके, सो P be a point on the ellipse, Q be the point on its auxiliary circle, then the angle ACQ, angle ACQ है ना, this angle is called the
eccentric angle is called the eccentric. ECCENTR. ठीक है. So the angle ACQ, which the line joining Q to the center of the ellipse makes with the major axis AC of the ellipse. This is called eccentric angle denoted by phi. ठीक है. Time is very less, so I will continue tomorrow with this. Okay, what is the geometry of this eccentric angle?